in front of you. And today, the thing which we'll be discussing today's arts, yeah, one of the best poem produced by William Wordsworth is Solitary Reaper. तो आज जिस नज़म को आज की क्लास में मैं और आप डिस्कस करेंगे वो लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के ज़रिए और वो है Solitary Reaper. Before we start this poem, and if we start a poem directly from the stanza, so that will not be a justice with the students. So what I want to do, first of all, I would like to give you the important points, थोड़ी सी डिस्कशन, उसके बाद we will definitely be discussing this poem in the light of stanzas. पहली बात तो याद रखिए कि हम अगर लेकर चलते हैं solitary, solitude से निकला है तन्हा या तन्हाई वाली, reaper the one who is harvesting, काश कर रही है, कटाई कर रही है. एक बात, the one who is writing this poem is William Wordsworth. Very first thing, he is also known as the poet of nature. The poet of nature. Why? Because he is quite interested in the world of nature. He is always inspired or attracted by beautiful scenarios or backgrounds or scenes. So he never missed any chance of missing or capturing the beautiful scenarios for his readers, because he was totally inspired by the beauty of nature. Next thing, why he was so and so? Because this is one of the characteristics of the romantic writers. But before we start this poem, आप याद रखिएगा बेटे कि the writers are divided into two groups. एक तो है रोमांटिक और दूसरे हैं क्लासिकल राइटर. क्या है? क्लासिकल राइटर्स. आपको जब तक ये बात पता ना हो, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू गेट द मीनिंग ऑफ दैट. देखिए, आसान बात करता हूं. रोमांटिक राइटर्स आर दोज राइटर्स दोज हु आर टोटली लॉस्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. इनके रिटन में आपको इमेजिनेशन बहुत ज्यादा मिलेगी. दे आर हाईली इंस्पायर्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ नेचर. ये नेचर से बहुत इंस्पायर है. नेचुरल ब्यूटी को डिस्कस करना यूं समझ लीजिए इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. तीसरी बात, दे वांट टू राइट देयर लिटरेरी वर्क्स इन वेरी इजी लैंग्वेज. वो चाहते हैं कि हम अपनी बात को आसान अल्फाज में करने ताकि एक आम पढ़ने वाला भी इसको समझ सके. अगर हम बात करते हैं क्लासिकल राइटर्स की, तो क्लासिकल राइटर्स दे डू नॉट हैव एनी स्पेस फॉर इमेजिनेशंस. वो इमेजिनेशन की तरफ नहीं जाते. दे आर हैविंग डिफरेंट थीम्स. चेक एंड बैलेंस पे उनका जो रुझान है वो ज्यादा है. दूसरी बात, दे ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड राइटर्स. जो ग्रेट राइटर्स बड़े बड़े गुजरे हैं ना, ये उन राइटर्स को फॉलो करने को ज्यादा तरजीह देते हैं. ये कहते हैं कि राइटर इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. लिखने वाला या शायर जो भी है वो एक आम इंसान से मुख्तलिफ होता है, लिहाजा उसकी लैंग्वेज भी मुश्किल होनी चाहिए. लेकिन रोमांटिक राइटर लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके साथ जो और इनके हामी हैं, दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट जो भी काम प्रोड्यूस किया जाता है वो लोगों के लिए है. तो काम इस लैंग्वेज में लिखा जाए या डिक्शन उसका इतना आसान हो कि अगर एक आम बंदा भी इसको पढ़े तो उसको उसका मैसेज समझ आ जाए कि भाई वो मैसेज क्या है. तो पहली बात जब मैंने की, ही इज अ रोमांटिक राइटर. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोमांटिक राइटर्स टू टॉक अबाउट द नेचर और द ब्यूटी ऑफ नेचर. या नेचर की बात करेंगे या ब्यूटी ऑफ नेचर की बात लाजमी करेंगे. दूसरी बात, देयर पावर ऑफ इमेजिनेशन इज सो पावरफुल. इनकी जो ताकत है इमेजिनेशन के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोमांटिक राइटर होते हुए इमेजिनेटिव होना इनके लिए बहुत जरूरी है. नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस पोएम from William Wordsworth's point of view. So the very first thing I would like to tell you, this time, just like his all poems, अगर पुरानी poems को भी देखा जाए, he is again inspired by some beautiful scenario, and that was present in some, the village area, where he found a girl who was singing some song about which he had no knowledge, and he was not familiar to the language even. उसको language कभी नहीं पता था. But the tone and the atmosphere was echoing with the beautiful voice of that girl that he was totally inspired and lost into the world of, into the song of that girl. He was accompanying, he was present along with his sister. And the moment he
was crossing one of the villages, or the village of Scotland. There he saw that girl who was singing while she was alone, and she was having, sort of, an instrument where she was working. Might be spad हो या कुछ और चीज़ हो, तो वो उससे काम कर रही थी, एक दरांती जिसे हम कहते हैं खास किस्म की. शी वॉज वर्किंग ऑन दैट एंड एट द सेम टाइम शी वॉज सिंगिंग टू, वो गाना भी गा रही थी. इमेजिनेशन पावर इसके अंदर मैं पहले ही बता चुका. रोमांटिक होने के आसार आपको बता दिए कि क्यों रोमांटिक है. अच्छा, ये भी बताया कि इस वक्त इंस्पायर क्यों हुआ. ही वॉज पासिंग थ्रू द विलेज ऑफ स्कॉटलैंड विच इज definitely very beautiful, and thereupon he saw a girl who was singing along with his sister. और अगली बात क्या थी? It is also classified as a pastoral poem. Pastoral poem इसी को कहते हैं जिसमें पोइट जो है किसी खूबसूरत नज़ारे या कोई धात या देहात या कोई खूबसूरत नज़ारा उसको नज़र आ गया और उसके बारे में वो बात कर रहा. तो आप देखेंगे जिस एंगल की है, जितने भी एंगल्स की मैंने बात की, वो तमाम इसके अंदर कवर हो रहे हैं. Now let's discuss this poem from a general point of view. Romantic poets, if you go through the lines of the poem, you will definitely come to know that indirectly the poet was inspiring us, calling us to come to the world of nature. Nature is quite attractive. और जो nature lover होते हैं, like William Wordsworth and so many other writers, they are of the opinion that it is a constant source of relaxation from the miseries and the problems of life. कि अगर किसी इंसान ने अपनी परेशानियों और दुखों और गमों से रिलैक्स होना है तो वो वर्ल्ड ऑफ नेचर में थोड़ी देर अपने आप को डबोए. और डेफिनेटली फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप चेक करें, सो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी सीक्रेट्स हिडन इनटू द वर्ल्ड ऑफ नेचर. जो इसको एक्सपोज करता है और जिस पर ये एक्सपोज हो जाए, उसके लिए दुनिया एक नए हिसाब से उसके सामने पेश होती है. सो डेफिनेटली nature is so beautiful, but basically problem is that we people are so materialistic that we have no time just to spend some time in observing nature. Everything, as it is mentioned in the Holy Quran by Allah Almighty, that I have made everything for you. Everything is here to serve you. So you must have some time just to observe, because there are some indications. Sometimes in the skies, in broad daylight, sky is quite blue. It has a different shape. It is lightning, illuminating everything. At night, it has a different charm. Sky is full of twinkling of stars, the galaxies, moon. Everything is representing a different scenario and it is quite attractive. But problem is that we have never observed that. हमने कभी कोशिश नहीं की. Who is doing that? If you try to go towards some greenery, some beautiful, areas, like in, northern areas in Pakistan, if you talk about the Switzerland and so many other, the Western countries, तो पोइट तो सिर्फ एक नज़ारे को देखकर इतना परेशान हो गया कि एक आवाज से वो इतना मुतासिर हुआ. If you start thinking that, so it is quite, obvious and a well-known fact that Allah Pak Himself said that, "Oh man, I have created you in great leisure. I created you the best." मैंने तुम्हें सबसे खूबसूरत और बहुत ज़्यादा फुर्सत में बनाया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसान बेसिकली है ही एक मिरेकल, एक मिस्टीरियस चीज़ है इंसान. लेकिन जितनी चीज़ें बनी वो भी सब इंसान की खिदमत के लिए अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई. तो पोइट जब मुतासिर हुआ तो मैं ये इस सोच में थोड़ा सा पड़ गया कि क्या ये कोई एक नज़ारा है. अगर आप बात करते हैं, फिर गोइंग टू टॉक अबाउट द आंट्स, ये जो चूंटियाँ होती हैं, they are of 1,000 types. 1,000 किस्म की तो चूंटियां हैं. 10% of the creatures of Allah Almighty are present on the drought, on the earth. जमीन पर 10% मखलूक है अल्लाह की. And 90% of creatures of Allah Almighty are present into the water. और 90% मखलूक अल्लाह की पानी के अंदर है. Not to think of this, world. ये तो वो जिंदगी जिसको मैं और आप जी रहे हैं, ये तो सिर्फ अर्थ पर मौजूद है और हम ही जानते हैं जिंदगी को. पता नहीं और कितने जहान, देयर विल बी सो मेनी मोर यूनिवर्सेस, और कितने जहान होंगे और कितने हिसाब किताब होंगे वहां पर. देयर आर एंजल्स, देयर आर फेरीज, देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट एंड वेटिंग फॉर अस. हमने कभी गौर नहीं किया. बट एवरीथिंग इज क्वाइट अट्रैक्टिव. जस्ट ट्राई टू पिक अप वन पीस ऑफ स्टोन एंड ट्राई टू थिंक दैट हु इज एबल टू मेक दैट. कोई बना सकता है? Nobody is there to make that. Try to check, the eyes of human beings.
ये कहा जाता है कि 16 करोड़ बल्ब सिर्फ अल्लाह पाक ने फर्क के लिए लगाए, इंसानों के आंखों के अंदर रंगों में फर्क करने के लिए। हैव यू एवर थॉट ऑफ योर टंग? इट इज गिविंग यू डिफरेंट टेस्ट। कितने टेस्ट आपको दे रही है? हैव यू एवर थिंक अबाउट योर ईयर्स? यू नो what is the function? Different voices are being differentiated by the power of listening, सुनने की पावर से। So when we think about this poem from that perspective, definitely it's quite shocking that we must have some time just to observe things like that. And it happens when you are going on some long drive and moving from one place to another. In between, if you are going to have some beautiful scenarios, so you get quite delighted, you get quite relaxed. आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपकी आंखों को अच्छा लगता है। जो स्विट्जरलैंड से होकर आए हैं, जो स्कॉटलैंड से होकर आए हैं, जो इंग्लैंड से होकर आए हैं, जो अमेरिका से होकर आए हैं, जो किसी भी खूबसूरत इलाके से होकर आए हैं, अगर आप उससे पूछिए अपनी लाइफ में अगर उन्होंने एक दफा विजिट किया, वो सिनेरियो को बार बार बताते, तो पता नहीं इस कायनात में ऐसे कितने नजारे होंगे जो मुझे और आपको स्पेल बाउंड कर दे। इसलिए तो डेफिनेटली इट इज सेड दैट फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इट मीन्स देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स वेटिंग फॉर यू, बट लाइफ इज टू शॉर्ट। अगर जिंदगी को कंपेयर किया जाए अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स के साथ, तो इवन आवर लाइफ इज टू शॉर्ट जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू बिहोल्ड ऑल दीज ब्यूटीफुल सिनेरियोज, कि इन तमाम खूबसूरत नज़ारों को। और खूबसूरत नज़ारा जब आप एक तरफ देख लें या नेचर में कोई चीज़ आपको एक दफ़ा अच्छी लगे, तो वो उस टाइम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब भी आप तन्हा होते हैं वो नज़ारा एक दफ़ा फ्लैशबैक ज़रूर करता है, आपके तन्हाई का साथी ज़रूर बन जाता है। इसको कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन। और पोएट ने जब ये बात की तो उसने सिर्फ एक बात नहीं की, वो लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर एक तो आपके साथ उसने क्या यूज किया, एक तो वो रोमांटिक है, एक तो उसने पावर ऑफ इमेजिनेशन दिखाई, फिर एक उसने इमेजरी बना दी, फिर उसने मेटाफर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया इस पोएम के अंदर, जो कि मैं और आप डिस्कस करेंगे। सो थ्रू दिस पोएम वी आर गोइंग टू गेट द मैसेज दैट वी मस्ट हैव सम टाइम टू ऑब्जर्व द ब्यूटीफुल नेचर व्हिच इज प्रेजेंट फॉर अस बिफोर आवर डेथ, मौत से पहले पहले। क्योंकि जिंदगी, लाइफ इज नॉट जस्ट फॉर द वर्ल्डली एक्यूमुलेशन। सिर्फ दुनियावी कदरों को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें जिंदगी नहीं दी कि सिर्फ पैसा कमाए और एंजॉय करते रहे। यस, यू डू एंजॉय, बट along with the enjoyment you must observe the beautiful nature created by Allah Almighty for us.